Students, today we are going to discuss about the first chapter of the statistics. The chapter name is Introduction of the Stats. The video is split into two parts, part 1 and part 2. In this video we will discuss about the meaning and scope of the statistics. First of all, meaning of statistics. Statistics क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फैक्ट जब हम न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? स्टैट्स कहलाता है. फैक्ट्स एक्सप्रेस न्यूमेरिकली कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. फॉर एग्जांपल, डाटा रिलेटिंग टू इनकम, प्रोडक्शन, पॉपुलेशन, प्राइजेस एटसेट्रा. इन अदर वर्ड्स, स्टैटिस्टिक्स मीन्स न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स. मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को जब हम न्यूमेरिक फॉर्म में, डिजिट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो वो स्टैट्स कहलाता है. There are some definition of stats. The first is statistics are numerical statement of facts in any department of inquiry placed in relation to each other. The second is by statistics we mean quantitative data affected to the market extent by the multiplicity of the causes. Now the characteristics of the stats. The first characteristics is स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स ओनली. स्टैट्स जो होता है वो केवल एग्रीगेट को ही एक्सप्रेस करता है. एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स आर स्टैटिस्टिक्स रेदर देन इंडिविजुअल फैक्ट. फॉर एग्जांपल, अगर हम ये कहें कि किसी पर्सन का वेट जो है वो 60 kg है, किसी दूसरे की इनकम जो है वो 30,000 पर मंथ है, तो वो स्टैट्स नहीं कहलाएगा. क्यों? क्योंकि ये फिगर्स जो है आपस में अनरिलेटेड हैं. वो स्टैट तभी कहलाएगा जब हम दोनों पर्सन्स का जो है वेट को कंपेयर करेंगे. सो फॉर एग्जांपल, द इंडिविजुअल वेट ऑफ अ पर्सन और इंडिविजुअल इनकम डजंट मीन स्टैट्स for the simple reason that figures are unrelated and can't be compared. If figures are related like data of weight, height, income, etc. called statistics because of their comparability and relationship. अगर हम वेट कंपेयर कर रहे हैं, हाइट कंपेयर कर रहे हैं, इनकम कंपेयर कर रहे हैं तो सभी जो हैं वो सबके लिए सेम होने चाहिए, डाटा हमारे होमोजीनियस होने चाहिए. सेकेंड, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल एक्सप्रेस. स्टैट्स को हमेशा न्यूमेरिक फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, कभी भी क्वालिटेटिव फॉर्म के अंदर स्टैट्स एक्सप्रेस नहीं होता. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई से द पर्सन इज़ वेरी ऑनेस्ट, द गर्ल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, इट इज़ नॉट अ स्टैट्स. सो all statistics are numerically expressed. Qualitative expressions like beauty, honesty, health, intelligence, poverty are not stats because they are not in numeric form. Statistics are affected to a market extent by the multiplicity of causes. जो stats होती है वो मार्केट के कई सारे फैक्टर से जो है अफेक्ट होती है. Statistics are affected by many factors. For example, data relating to agriculture production are affected by rainfall, technique of cultivation, use of manure, quality of soil, seed, etc. In the same way, stats of the price of a good are affected by their demand, supply, import and export, etc. तो stats केवल एक कॉज से अफेक्ट नहीं होता बल्कि मल्टीपल कॉजेज से अफेक्ट होता है. स्टैटिस्टिक्स आर इनोमिनेटेड और एस्टिमेटेड. स्टैट्स जो है वो काउंटेबल भी होता है और एस्टिमेटेड भी होता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ देयर आर 40 स्टूडेंट इन द क्लास, सो इट कैन बी इजीली काउंटेड. बट इफ़ आई से डैट देयर आर 40,000 पर्सन हु आर वॉचिंग द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, सो इट इज़ एस्टिमेटेड. तो स्टैट्स जो होता है वो इनोमिनेटेड भी होता है और एस्टिमेटेड भी. According to the reasonable standard of accuracy, statistics are numerical statement which can either be enumerated or estimated by the experience of observer. Sometime when actual measurement of figure is not possible in a particular field of inquiry, then method of estimation is applied. For example, if we say that there are 40 students in the class of 11th of Modern Public School, Delhi, the figure is 100% accurate because it is countable. If we apply counting method, on the other hand, if we say that there 40 student people are watching the cricket match between India and Pakistan, this figure can't be obtained only by the estimation method. Statistics should be collected by systematic manner.
जो डाटा होता है वो एक सिस्टमेटिक मैनर से जो है वो कलेक्ट किया जाता है. स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड सिस्टमेटिकली in a planned way. Before collecting the data or suitable plan for their collection should be prepared. If that are collected in a and systematic manner, it create wrong conclusion. अगर वो systematic manner से collect नहीं होता है तो कई बार गलत result भी show करता है. Next is statistics should be collected for the predetermined purpose. Data तभी collect किए जाते हैं जब पहले से कोई उनका purpose हो. Before collecting the data, purpose of their collection should be well defined. Unspecified, otherwise it would not serve any purpose, rather it would lead to you a wrong conclusion. अगर आप बिना किसी पर्पस के डाटा को कलेक्ट करते हो तो वो रॉन्ग कंक्लूजन भी दे देता है. नाउ द नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. In the olden days, as mentioned earlier, the use of stats was restricted to deal with the affair of the state. पहले क्या था, स्टैटिस्टिक्स का जो स्कोप था बड़ा लिमिटेड था, लेकिन अब आजकल के टाइम में मॉडर्न इरा के अंदर जो स्टैट्स का स्कोप है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है. स्टैट्स अब हर फील्ड में यूज़ होता है, लाइक इकोनॉमिक, बिजनेस, इंडस्ट्री, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैनी अदर फील्ड्स. द फर्स्ट इज़ बिजनेस. स्टैट्स का बिजनेस में क्या यूज़ है? स्टैटिकल मेथड हेल्प द बिजनेसमैन टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन सेल एंड प्राइस. कोई भी पर्सन जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उससे पहले वो डाटा को कलेक्ट करता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल कितनी है, कितनी प्राइस रखनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आने वाला बिजनेस वो एक्सटेंड करता है या न्यू एस्टैब्लिश करता है. सैम्पलिंग मेथड आर यूज्ड फॉर कंडक्टिंग बिजनेस एंड मार्केट फॉर वेज before starting new business, how to expand the existing one. Statistical information is highly useful. In fact, modern business is not possible without statistics. Second, गवर्नमेंट जो है कोई भी पॉलिसी बनाती है, कोई भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे कलेक्टेड द डाटा. स्टैटिस्टिक्स इज रिगार्डेड एज एन indispensable tool to run an efficient administration. The government must know the fact about the price, national and per capita income, population, employment, etc. to formulate suitable policies for economic and social development. Ministry of Planning required statistics for various fields of the economy, and Home Ministry take into account the statistics of crime. The third is statistics and natural science. Natural science in the biology, medicine, zoology, botany, किसी भी चीज़ के अंदर आपको जो है डाटा की ज़रूरत होती है. स्टैटिकल मेथड फॉर द ग्रेट सिग्निफिकेंस इन स्टडी ऑफ ऑल नेचुरल साइंस लाइक बायोलॉजी, मेडिसिन, जूलॉजी, बॉटनी एट्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, इन डायग्नोजिंग द करेक्ट डिसीज, डॉक्टर रिलेट टू द फैक्चुअल डाटा लाइक टेम्परेचर, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर एट्सेट्रा. इन द सेम वे, the success or failure of a drug depends on the number of patient cured by it. तो डाटा जो है वो केवल बिजनेस में नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के लिए नहीं, इवन मेडिसिन के इन्वेंशन के लिए और किसी भी डिजीज़ को एनालाइज करने के लिए भी ज़रूरी है. द फोर्थ इज स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च. जितनी भी रिसर्च होती हैं उनके लिए भी जो है डाटा का होना ज़रूरी है. स्टैटिस्टिक्स प्रूव टू बी वेरी यूजफुल इन द हैंड ऑफ रिसर्चर्स in their respective fields. They make a give use of statistics and its method. They are constantly engaged in the task of research, trying to maintain functional relationship between variables such as price and demand, income and expenditure, poverty and sickness, crop production and use of fertilizer, growth of animals and different diets. Now the next is statistics and other uses. जो स्टैट्स है उसका जो है कई और जगह पर भी यूज़ है. डिसाइड अबाउट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन. स्टैट्स ऑल्सो यूज्ड इन सम अदर फील्ड्स. दे आर एप्लीकेबल whenever quantitative studies are to be made. For example, bank brokers, insurance company, auditors, social workers, labor union, etc. So in fact, in last we can say that the stats are all used almost in every field. Today has risen to the science of universal applicability. Most of the people in their daily life make use of statistics knowingly or unknowingly in taken decision.